हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमसाइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एंट्रेंस एग्जाम सीरीज का फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं एंड दिस वीडियो सीरीज इज वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस, नीट, सीईटी एंड आईआईटी जैम एग्जाम्स। सो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज क्लास। सो वी हैव कंबाइंड द सिलेबस फॉर जेई मेंस, नीट, IIT JAM and CET, and this is the syllabus that we are going to cover in our entrance exam series. ठीक है, in today's class we will be doing types of solution, then different methods of expressing concentration of solution such as molality, molarity, mole fraction, percentage by volume and percentage by mass, and we will be doing numericals based on this. अभी हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वी नो दैट सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अभी होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? द होमोजीनियस मिक्सचर मींस इट्स कॉम्पोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सो व्हाटएवर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, whether it is liquid or solid or gas, that is totally dependent or that is totally decided by the state of solvent. Clear? For solvent we give number 1, for solute we give number 2. W is representing the mass. If I say W1, then that is mass of solvent, or W2 is mass of solute. N stands for number of moles. N क्या है? Number of moles. और 1 क्या है? Solvent. So N1 is number of moles of solvent, whereas N2 is number of moles of solute. M molar mass. So M1 बोलेंगे तो molar mass of solvent and M2 बोलेंगे तो molar mass of solute. So these are the symbols that we are going to use in these chapters. So बच्चों, अभी हम लोग solvent के regarding कुछ important बात डिस्कस करने वाले हैं. So students, हम लोग define करते हैं solvent को as generally the component which is present in a larger amount. Correct? But in some cases, the state of solution is same as that of the state of component which is present in the smaller amount. Then that substance is also called as solvent. So basically हमें priority किसको देनी है? The solution का जो state determine करता है उसको priority देनी है। मतलब अगर solution अगर liquid state में है तो जो component liquid state में है वो हमारा solvent रहेगा। Just to illustrate this, I have an example. ध्यान से सुनना. So let's say in a syrup solution that is liquid, it contains 60% sugar which is solid in state and 40% water which is liquid. Now the state of this water is exactly same to the state of the solution. Therefore, water is the solvent here even though it is present in a lesser amount. Clear? That is very important point. So अभी हम लोग देखते हैं types of solution. So depending upon the state of solvent, there are majorly 3 types of solutions are there: solid solutions, liquid solutions and the gaseous solutions. In solid solution, solvent will be always solid irrespective of the state of solute. ठीक है? So these are the corresponding examples of the solutions. So this is a table. So students, based on the amount of solute dissolved, we can classify solution in 3 categories. पहला है unsaturated solution. The solution which contains lesser solute than the amount of solute it can dissolve is called as unsaturated solution, and we can dissolve more amount of solute in the solution at that particular temperature. Let us explain this unsaturated solution in detail. So suppose students, we have a 10 ml water. ठीक है? और इस 10 ml water में मान लो for the sake of understanding हम लोग ज्यादा से ज्यादा 2 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अगर उस 10 ml वाटर में हम लोग ने 1 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर दिया तो वो सॉल्यूशन की कैपेसिटी और NaCl डिसॉल्व करने की है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव नहीं हुई, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझा? और इस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लोग और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अगर हम लोग ने मान लो ये एक सॉल्यूशन में जितनी इसकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, उतना अगर हम लोग ने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है? एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। सो यही सेकेंड टाइप है अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
The solution which contains as much solute as it can dissolve at a given temperature is called as saturated solution, and the concentration of saturated solution is what is called as solubility. Now there is a third category is supersaturated solution. The solution which contains more solute than the amount of solute it can dissolve at a particular temperature, then that is called as supersaturated solution. Clear? Now let's discuss different ways to express the concentration of solution. So पहला है percentage. So percentage can be expressed by three way. पहला होता है percentage by mass और इसको mass percentage भी कहते हैं और W by W percentage. So percentage by mass is the mass of solute in gram dissolved in a solvent to form 100 grams of solution, and it has got no units. So percentage by mass is mass of solute upon mass of solute plus mass of solvent. Mass of solute grams में होता है, mass of solvent grams में होता है. See, mass of solute plus mass of solvent is mass of solution और ये grams cancel हो गए. That is why percentage by mass has got no units. Clear? So mass of solute का symbol W2 है. So W2 upon W1 plus W2 into 100. So this is the formula for the percentage. Let us discuss some examples. 10% mass by mass sugar solution. इसका मतलब क्या होता है? 10% means 10 upon 100. Numerator indicate करता है mass of solute. Denominator indicate करता है mass of solution. That means 10 grams of sugar, that is solute here, dissolved in 100 grams of solution. Understood? अभी हम लोग देखते हैं percentage by volume और उसको volume percentage कहते हैं और V by V percentage भी कहते हैं. So it is the volume of solute in ml present in the 100 ml of solution and it has no units. So percentage by volume of solute is equal to volume of solute in ml upon volume of solution in ml और ये ml और ml cancel हो गए, that's why it has got no units. So अगर हमें बोला है 20% ethyl alcohol by volume, it means 20% मतलब 20 by 100 और 20 किसको इंडिकेट करता है? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट को. 100 क्या इंडिकेट करता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो 20 ml ऑफ सल्यूट दैट इज इथाइल अल्कोहल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. समझा? सो अभी देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सो मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम. सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. क्लियर? सो अगर हमें बोला है 10% मास बाय वॉल्यूम परसेंट sugar solution means 10 grams of sugar dissolved in 100 ml of solution. अभी हम लोग देखते हैं strength of solution. तो amount of solute in grams present in 1 liter of solution is called as strength of solution. So mass of solute by volume of solution in liter and it has got units of grams per liter. So अभी हम लोग बोला है 5 gram per liter मतलब 5 grams of solute present in the 1 liter of solution. अभी हम लोग देखते हैं mole fraction. So students, mole fraction of any component in the solution is defined as the ratio of number of moles of that component present in the solution to the total number of moles of all component present. Clear? So suppose if you are having binary solution means solution with two components. So x1 is the mole fraction of solvent and x2 is the mole fraction of solute. So x1 is number of moles of solvent upon total number of moles, that is n1 plus n2, and x2 is n2 by n1 plus n2, where x1 and x2 are the mole fractions of solvent and solute respectively, and if you add them it will become 1. So sum of the mole fractions of all components present in the solution is 1 and it also has got no units. Let's now discuss molality. Molality का symbol है small m. It is defined as number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. Other ways to express concentration के बाकी सब में denominator में solution है, but सिर्फ molality ऐसा unit है जिसके denominator में solvent है. So be careful with this. So best thing regarding molality is it is independent of temperature and its units are moles per kg और उसको मोलाल कहते हैं, उसका सिंबल स्मॉल m होता है. So molality is equals to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So it is equals to this formula. It will have this formula. So let's discuss two important point regarding molality. पहला important point है molality is the most convenient method to express the concentration because it involves
the mass of liquids rather than their volumes, and it is independent of variation of temperature. This is very important point regarding molality. Second point है 1 molar solution is less concentrated than 1 molar solution. very important statement students, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से याद रखना. चलो अभी हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी. सो x1 is equal to n1 upon n1 plus n2, x2 is equals to n2 upon n1 plus n2. So let this be equation number 1, let this be equation number 2. If you divide equation number 2 by equation number 1, ये n1 plus n2 cancel हो जाएगा, it will become n2 by n1. So n2 is equals to mass of solute upon molar mass of solute, because we know that number of moles is equals to mass of that substance divided by molar mass of that substance. वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है. If you rearrange, we will get this relationship. On multiplying by 1000 on both sides, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. हमें मालूम है कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो अभी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम्स में लेने का और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने का. W2 into 1000 upon M2 into W1 in grams, this will become equal to small m, और ये जो M1 है वो बाजू में जैसे का वैसा रहेगा. If you rearrange, then we will get formula as M molality is equals to x2 into 1000 upon x1 into M1. So x1 को अगर हम लोग 1 minus x2 लिखेंगे, then we will get this relationship. So this is the relationship between मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, वेयर अपना मोलैलिटी का यूनिट्स रहेगा मोल्स पर केजी, मोल फ्रैक्शन तो नो यूनिट, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हैज गॉट यूनिट्स ऑफ ग्राम्स पर मोल. सो यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ यूनिट्स. सो लेट्स डिस्कस मोलैरिटी. मोलैरिटी हैज सिंबल कैपिटल M. सो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution is called as molarity. So its units are moles per liter, or it is also called as molar. मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा? मोलाल. मोलैरिटी का यूनिट मोलार. प्लीज डोंट कंफ्यूज इन दिस. So molarity is number of moles of solute by volume of solution in liters. If you just substitute here, then we get the formula for molarity like this. So students, mass of solute in grams upon volume of solution in liter, this is nothing but the strength. Therefore I can write molarity as strength upon molar mass of solute. क्लियर. सो अगर हमें बोला है 1 मोलार सोल्यूशन, मोलार मतलब क्या होता है? मोल्स पर लीटर होता है. 1 मोल्स पर लीटर मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. अगर हमें बोला है 1 डेसीमोलर, दिस डेसी इज SI प्रीफिक्स. सो इफ यू राइट फॉर डेसी एज 10⁻⁻1, इट बिकम्स 0.1 मोल्स पर लीटर. सो 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. 2 सेंटीमोलर, सेंटी मतलब 10⁻², सो 2 into 10⁻² कितना होगा? 0.02 moles per liter. That is 0.02 moles of solute in 1 liter of solution. Clear? Now let's now discuss very important points regarding molarity. So molarity is not preferred in many cases because it depends on temperature, and as temperature changes, volume will also change, and hence value of molarity will also change. So we always prefer to express the concentration in molality. Understood? चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स अज्यूम दैट D is the density of solution in grams per ml, and that solution contains X percentage of solute by mass. So mass of 1 liter of solution will be equal to 1000 into D grams. So ये कैसे आया? देखो बच्चों, we have assumed that density is D and it is expressed in a grams per ml. So 1 liter solution, it represents 1000 ml. Density is equal to mass by volume. हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ 1 liter of solution. तो वॉल्यूम will be 1000 ml. Therefore mass of 1 liter solution will be equal to density into volume. और डेंसिटी कितना है अपना? डेंसिटी इज रिटन एज D and volume is 1000 ml. डेंसिटी का यूनिट से ग्राम्स पर ml और 1000 का यूनिट से ml, तो ये ml gets cancel. Finally mass of 1 liter of solution is 1000 into D grams. वही तो लिखा है, समझा? X% of solute means X grams of solute in
100 grams of solution. Therefore x into d into 10 grams of solute in 1 liter of solution. ये कैसे आया देखो, x percentage by mass मतलब x grams of solute in 100 grams of solution. Mass of 1 liter of solution is 1000 into d grams. So x gram of solute is present in 100 gram. तो 1000 into d grams of solution में कितना grams of solute है? Let it be y. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लाइन करेंगे और इसको ऐसे इक्वल करेंगे. Therefore y will be equal to x into 1000 into d upon 100. So कैंसिल हो जाएगा. So ये y क्या है? y is the mass of solute present in 1000 into d grams of solution. 1000 into d grams of solution क्या है? It is 1 liter of solution ना. Therefore in 1 liter solution mass of solute present is 10 into x into d grams. Clear? वही तो लिखा है. Number of moles in 1 liter of solution is, अभी देखो ये मास है, मास को अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर एंड दैट इज नथिंग बट मोलैरिटी. Therefore molarity is equals to x into d into 10 upon m2, where x is the mass of solute in grams, density of solution in grams per ml, and m2 is the molar mass of solute in grams per mol. Now let's discuss molarity of dilution. So let m1 and v1 be the molarity and volume of solution before dilution, and m2 and v2 be the molarity of solution after dilution. So students, dilute करना मतलब क्या करना? concentration कम करना. इसका मतलब लेट्स से अगर हमारे पास 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है, अगर उसमें हम लोग सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे मतलब और वाटर ऐड करेंगे तो उसकी मोलैरिटी कम हो जाएगी. बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेन वी डाइल्यूट द सोल्यूशन मोलैरिटी चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज हमने यहाँ पे सोल्यूट निकाला भी नहीं है और सोल्यूट को ऐड भी नहीं किया है. तो वही हम लोग अप्रोच यहाँ पे यूज करेंगे. सो अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन्स सेम. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी into volume. वही तो किया है. It is before dilution, it is after dilution. So this is very important formula we are going to use. Let's discuss one numerical based on this. Find out the molarity of solution that is obtained by mixing 200 ml of water in 300 ml of 0.5 molar NaOH. Let's discuss given data. पहला for NaOH, NaOH का molarity कितना है? 0.5 molar और NaOH का वॉल्यूम 300 ml. एंड फाइनली जो मिक्सचर बनेगा उसका वॉल्यूम 300 प्लस उसमें 200 ml वाटर डाल दिया और हमें फाइनल मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक है. 0.5 into 300 will be equals to m2 into 200 plus 300. So m2 is equals to what? 0.3 molar. समझा? So let's discuss molarity upon mixing. So let there be 3 samples of solution. But students, यहाँ पे एक चीज याद रखना, these 3 samples of solution it should have same solute and the same solvent. So with their molarities m1, m2 and m3 and volumes v1, v2 and v3 respectively are mixed, then the molarity of the resultant solution is given as this formula. m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 will be equals to mr into v1 plus v2 plus v3. So finally mr क्या है? Resultant molarity, and v1 plus v2 plus v3 is the resultant volume after mixing. This is a very important formula. So students, 5 important points to be discussed now. पहला है मिलीमोलर. मिली मतलब 10⁻³ राइट. सो मिलीमोलर मतलब 0.001 मोलर और वी कैन से 1/1000 मोलर. सेंटी मतलब 10⁻² है ना, दैट इज 0.01 मोलर, दैट इज m/100 मोलर. डेसीमोलर मतलब 0.1 मोलर, दैट इज m/10 मोलर. सेमी मोलर मतलब m/2 मोलर, 0.5 मोलर. एंड 1 मोलर इज वी नो दैट 1 मोल्स पर लीटर. स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स है ना, डेसीमोलर, सेमीमोलर, सेंटीमोलर, दिस पॉइंट्स दे गिव इन एग्जाम इन दिस वे. ये आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स. अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी. सो 1/मोलैरिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय 1000. स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये. सो दिस फॉर्मूला is valid only when the quantities are in the following units. So पहला है मोलैरिटी. मोलैरिटी का यूनिट्स क्या होना चाहिए? मोल्स पर केजी. डेंसिटी का यूनिट्स होना चाहिए ग्राम्स पर ml. ग्राम पर ml मतलब केजी पर लीटर. कैसे?
देखो डेंसिटी का यूनिट्स अगर हम लोग ग्राम पर ml लिख रहे हैं तो ग्राम से अगर अपने को केजी में कन्वर्ट करना है तो आई विल राइट 10⁻³ kg एंड यहाँ पे 10⁻³ लीटर्स. सो ये 10⁻³ और ये 10⁻³ गया. Therefore we can say 1 gram per ml can be written as 1 kg per liter. So density can be written in units of kg per liter and molarity का units moles per liter रहेगा. ठीक है. And अपना molar mass of solute grams per mole में है. So this is a very important formula, but you have to take care of these units. अगर units ये form में नहीं दिया है then please convert them in this desired form and then only solve the question. समझा? Now let's discuss relationship between molarity and mole fraction. So let m be the molarity of solution, x1 and x2 be the mole fraction of solvent and the solute respectively, n1 and n2 be the number of moles of solvent and solute respectively. So बच्चों mass of solution क्या रहेगा? Mass of solution is mass of solvent plus mass of solute. तो mass of solvent कैसे find out करेंगे? Number of moles into molar mass, because we know that number of moles is equals to mass by molar mass. Therefore mass is equal to number of moles into molar mass. वही तो किया है. This is the mass of solvent and this is the mass of solute in grams. And ये है अपना mass of solution. Volume of solution is mass by density. So mass मालूम है, density हम लोगों ने d माना है. So molarity is number of moles of solute into 1000 upon volume of solution in ml. So ml में लिया ना, इसके लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है. So ये वॉल्यूम को यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर लिया. So we get this relationship. So we are dividing both numerator and denominator by n1 plus n2. Then इसको डिवाइड करेंगे तो n2 upon n1 plus n2 will be x2. This will be x1 and this will be x2. Clear? So this is the very important relationship between molarity and mole fraction. Let's now discuss formality. It is represented by symbol F. So in case of ionic compounds such as NaCl, Na2CO3, the term formality is used in place of molarity. The formality of the solution is defined as number of grams formula masses of the solute dissolved per liter of solution. So it is represented by symbol F. So the term formula mass is used in place of molar mass because in case of ionic compound they exist as ions and not as a molecule, and the formula mass is the sum of the atomic masses of the atoms in the formula of the compound. That's a very important point. So it is very important to note that if you have a 0.2 molar aqueous solution of Na2CO3, it contains 0.4 molar Na plus ions and 0.2 molar CO3 2- ions, because in aqueous solution 1 mole of Na2CO3 gives 2 moles of Na plus ions and 1 mole of CO3 2- ion. मतलब कैसे? So if you have a Na2CO3, this Na2CO3 dissociates in the solution to give you 2 moles of Na plus ions and 1 mole of CO3 2- ion. Initially let's say इसका 1 मोल है, फिर ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, and after dissociation ये 0 हो जाएगा. फिर ये स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1:2 है ना, मतलब ये 1 मोल अगर कंज्यूम हुआ तो ये 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा और ये 1 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा. So this is the way. So 1 mole of Na2CO3 will give 2 moles of Na plus ions and 1 mole of CO3 2- ion. तो सपोज अगर ये 1 molar solution है, it will give 2 molar Na plus ion and 1 molar CO3 2- ion. So हमने let's say अगर 0.2 molar Na2CO3 लिया है, then that will give upon dissociation 0.4 molar Na plus ion and 0.2 molar CO3 2- ions. Clear? So students, आज के लिए बस इतना ही. We will be meeting with more information in our upcoming lectures. Thank you so much for listening. If you like our efforts, then please like the video, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.